Hello Python developers. Let's solve another question problem of Python string series. This is our, I think, 41 question problem. Find last occurrence of character. This belongs to intermediate Python string question problem. Find last occurrence of character. Okay, last occurrence means कि last में हमने कब use किया है that character. Okay, so let's find out. Find last occurrence of character of characters. So first we take in string as an input. So input, enter a string. First we take string as input, then character equal to input, enter a character to find, then क्या लेना है हमें index, index equal to लेंगे s dot r find character. If index is not equal to what, index is not equal to -1 colon, प्रिंट क्या कर देंगे हम, last occurrence of character is right here your index where it is available, else print character not found. Okay, as simple as that if we can print. Okay, now run this program. एंटर अ स्ट्रिंग, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारी स्ट्रिंग में बार बार, इसको हम चेक करते हैं एक बार. इस जगह पे हम s1 ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पे भी s1 ले लें. नाउ रन दिस. नाउ प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड. एंटर अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लेंगे प्रोग्रामिंग, प्रेस एंटर, और यहाँ पे कैरेक्टर फाइंड आउट करना है. तो हम ऐसा करते हैं जी को फाइंड आउट करते हैं. जी हमारा लास्ट अकरेंस क्या है जी के. प्रेस एंटर करेंगे तो 10 आ रहा है, बट हमारा एक जी तो हमारा एक पहले भी आया है, ये क्यों यहाँ पे शो नहीं किया इसमें, क्योंकि हमें लास्ट अकरेंस फाइंड की थी आर फाइंड के थ्रू. तो हम फाइंड आउट करेंगे दिस वन, दिस जी, लास्ट जी. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th इंडेक्स पे हमारा अवेलेबल है जी एट last occurrence. Okay, so thanks for watching. Please like, share, and subscribe if this video is helpful for you. We will meet in our upcoming video of Python string series. So thanks for watching.